Hello everyone, I am Shreya from IT second year, And I am Abhishek from IT second year. and both of us welcome you all to the day 5 of Android Study Jams. And today we are going to get started with the database part. So, means the first part that is about real-time database. I am going to cover up the real-time database and the ML kit part, and then Abhishek will continue with the Firestore as well as the storage part. So let's get started with it. So means yesterday we have seen means the introduction about the Firebase and one of its service that is authentication. And today we are going to get introduced to its most important, that is the database part. So first of all, real time database. So means we get to know about real time database first because means it syncs the data in real time, which means that means as soon as the data is updated in the database, we get to means the changes are reflected in our app, means in real time, that is without any lag. So let's move to the next slide. Okay. So the Firebase real-time database is actually a cloud-hosted database, and it stores the data in JSON format. JSON is actually means it stands for JavaScript Object Notation. It is actually a format in which the data is transferred from one computer to another computer. Means uh, like mm, if you want to send a data, like must have read means about HTML. So means how it have different tags like body tag, head tag. So similarly JSON also have tags and which contains the different parts of the data, and in that manner only the data is transferred from one computer to another computer. So means our real-time database also uses this JSON format, which is means which make it lightweight. When you build your cross-platform app with our app with Apple platform or Android and JavaScript SDK, means all of our client shares one real-time database instance and automatically receive update with the newest data. Means yeah, it is not just for Android. We can, as we have seen, that means Firebase is works for multi platforms like Android, iOS, and all. So similarly, we can use a real time database also for all the different platforms. Okay, so means now let us analyze the means different aspects of real-time database. So first of all, what's the data model? So it actually stores data in hierarchical structure. So means when it comes to storing the simple data, like means you want to store let us consider if you want to store student details. So means it's like the name of the student, after that inside, or the ID of the student, and inside that you want to store the mm, the other information of the student like father's name, mother's name, and then marks of the student. Then inside the marks you want to store the different subjects and then grades and all. So means you can store it in a tree structure. However, if means when the data become more and more hierarchical as well as means branched, then it becomes difficult to handle the data. So it is actually meant for a less amount of data, and when we have to store simple type of data. However, when the as the complexity increases, it becomes difficult to organize and scale the data. Okay. Now, the second point is real time and offline support. Yeah, it means even if the user is offline, still means whatever the data uh, that means the which was earlier synced, it will remain as it is. Means we are not going to lose any data. Means up to the last time when we had the internet connection, up to that our data will be there. However, means the new data won't get uploaded in our app. However, up till then the data will be there.
So it provides an offline support for Apple and Android clients. Third is presence, that it can record client connection status and provide updates every time the client connection state changes. Means as soon as you are going to upload any data and it will get uploaded to the Firebase. So means it keeps on a check. We will see in the code why it happens, so means what's the backend feature behind it. But till now, as the feature says, that means it keeps us updated. The fourth point, how to read as well as write. So means for writing in real-time database, we use two functions, that is set and update. Set is used to add new data, and update is actually a function which is used to means update if you want to update some data, means which is already existing, and if you want to update it by a new value. For reading, we use get value. This thing actually we are going to see in our code part. So hope means you must be able to get at least some idea about it. Okay, so we can see how it actually looks. Means it is actually stored in the means tree form, or we can see as a branch form. Means as a, like, it's the parent and inside it its child, means a hierarchical structure. And we can make it more complex also. However, means if the complexity will increase, it will become difficult for us only to organize the data, to write as well as to retrieve the data. Okay, I'll show you it in the Firebase console also later on. Okay, so let's get started with the means code part. So first of all, I would like to show you the Firebase console, means how it looks actually. Okay, so I hope you must be able to see the meme app console. Okay, so here, yeah, it's our real-time database. Okay, so inside it, you can see how in hierarchical form the data is stored. It prompts no description, no title. We will see in our code part that how it's coming. Okay. Actually, I just wanted to show you means how it actually looks in the console. Okay. Abhishek, can you show them the app, means how it's working on the emulator, and how one can add the data, uh, and how we can retrieve it. Okay. So see, you can add. We are adding the data, means we are giving the title and description, and upon saving the data, we should get it in this my note.
Can you try it once more? Okay, so means there may be some issue. However, let's go to the. Okay, have you added? Okay, okay, okay. Now let us see how the code part looks actually. Okay. So first of all, we are going to have our main activity. Let me show you the XML part. I hope it's visible. Okay. So means here what I have done, I have applied a recycler view. Why? So that I can whatever the data I am adding, I can get it over here. And then I have designed my individual element which is going to appear here in this XML file. Yeah. So you can see this one will contain the title and this one will contain the description of my node. Okay. Now in the main activity, what am I doing? So first of all, I have means, applied an button to compose node. Let me show you that create node also activity. Yeah. So here means I have applied two text views, two edit text views, where means you can type your you can give a title and as well as a description, and upon saving it should save the data in our real-time database. So in my create node activity, as soon as we will click upon, yeah, and here we are getting those two views, that is the edit text views as well as means that button. And as soon as we are going to click upon the button, what it's going to do. So here we can see we have applied that on click listener on our button. And then as soon, yes, I would like to show you our data class also. Here actually I have made an means if you have learned the object oriented programming, then you must be knowing about classes which are actually used to means make a which is actually user defined data sorry which is actually a user defined data type, and which is used to store different types of data. Okay. But we use it for our convenience when we want to make it becomes easy to have a collection of data, so that later on if we want, then we can uh, means make array list of it or like that. Okay. So here in our data class, we are giving whatever the values of whatever the means string of our node title as well as node description was there. We are storing in means in an object, that is node detail. And then with the help of this Firebase database get instance,
get reference, we are actually trying to get the reference of that nodes node. Okay, means first of all we are trying to make reach up to that node so that we can means add our data over there. And then in this, so this db actually contains now the reference to that node. And in means up now in that node, now our we are going to set means in the hierarchical form we are going to set a child, and what that child will contain, it will contain name dot string. So let us now see what this name is. So this name is user dot display name. So actually we haven't used any authentication over here, so our user will be null here. However, means it's important to means so that different users, if they want to store data, they can store means the data differently. So till now it will be null here. However, means it's important to make that hierarchical structure. So db.child means in the child that null value will get stored, and over there we are setting the value of the node's details. That is means our node title and the node description will be inside this value. And if it is getting successfully added, then the node title as well as the node description text which was present in our edit text view will get cleared. And then we are going to make a toast, that is our data is added. Else if it gets fails means if due to some reason we are unable to add the data, then it will generate a toast that is failed. So means these actually toast make our code more responsive so that we can get that whether means where we are getting the problem. And after means and once the data gets added, we are moving from this intent, that is the create node activity, to the main activity. So let us see now what as we will move toward the main activity, what will happen. Okay, so now in our main activity, in this dbrf we are getting the database reference. We have made an yeah, we are getting a recycler view also, which I have shown you over here. Yeah, this recycler view we are getting. Okay, and we have made an node array list. Means this array list is actually going to contain each item of the node, which is containing the title as well as the description of the node. Okay, okay, yeah. So yeah, this is actually our that means compose node button, which I can show you over here. Yeah, this is actually that button, upon clicking which you will move to that create node activity. Yeah, so now we are getting the means recycler view over here from our layout. And then we have used means we have set it to linear layout. You can means a linear layout, so that means it will be arranged like means in a means vertical manner. Okay, if you want you can use a grid layout also, means that is used for means different kinds of layouts are there. You can keep the span, yes, if you are using the grid layout, then you can use the span means different spans like 2 3 4, so that means now the recycler view will be visible in the form of grids. You must have get to know about all of this in the recycler view video. Okay, so and now here we are initializing our node array list, which is actually means the array list of our node data. Yeah, this is the same node data class name which I have shown you earlier. Okay, now here I am calling the get node function. Let's see what this get node function does. So in our get node function, first of all, we are getting the reference of that nodes, means that position, that node, and then uh, to that position we have means added we have called an add value event listener. And what's gonna do, so
it's gonna take the snapshot. So means what means this snapshot function actually does what snapshot means. Snapshot means taking the means taking a quick picture, means whatever is there. Okay, so this snapshot function also does the same, means whatever data is present over there in the very real time, it's gonna get uploaded. Okay. Okay, so here our this is our variable which is gonna get the value of the of means the title as well as the description, mm, which are actually means the variables of our node data class. And then after getting that value, if the value is not null, this is actually called as null check. So if the value is not null, then it will get added to the node array list. Okay, and as soon as it get added to our node array list, we are going to set it in our adapter. Okay, and this is gonna work for our app. And our adapter dot notify dates data set change, so it is this function will actually notify our recycler view, and the new data will get up, means we will be able to see our new data. Okay, so this was, I think, all about the code part of the real-time database. Okay, so uh, uh, we will share the means documentation of the real-time database, so that you can means read as much as you want about it and you can get in-depth knowledge. So Yuvraj, can you share the link means of the of the documentation? Okay. So now I would like to hand over to Abhishek for explaining the Firestore part. Yeah, so hello everyone. So yeah, Cloud Firestore. So with Cloud Firestore, तो पहली बात तो ये कि इसको गूगल ने रियल टाइम डेटाबेस के काफी टाइम बाद लॉन्च किया. तो बेसिक सी बात है कि इसमें कुछ तो एडवांटेजेस दिखे होंगे गूगल को कि इसको थोड़ा उसका ऑल्टरनेटिव की तरह लॉन्च किया गया है. सो इसकी इसके बारे में आगे जानते हैं हम लोग. So yeah, Cloud Firestore. So it is also a NoSQL database. It was developed by Google as an alternative of the Firebase database that is also known as the real-time database. So बहुत ही कम टाइम में इसने काफी सारी मैसिव पॉपुलैरिटी गेन कर ली है और इट इज अ वेरी डेवलपर फ्रेंडली एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसको यूज करके. आप इसको अपने आप में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो. सर या तो इसकी कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस हैं एंड उसमें से कुछ है कि लाइक इसमें जो क्वेरिंग होती है वो एसिंक्रोनस होती है. तो लाइक बहुत ही फास्ट क्वेरिंग होती है एंड डेटा फेचिंग बहुत इजीली कर सकते हो आप. इसमें से कुछ भी आप स्टोर करोगे उसकी कीज से आप इसको डायरेक्टली बहुत इजी से बहुत अच्छे से आप अपने ऐप में एक्सेस कर सकते हो. एंड ये काफी फास्ट भी होता है रियल टाइम डेटाबेस से. तो या इट इज मोर प्रेफर्ड देन रियल टाइम डेटाबेस. और एक्सीलेंट डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं. इसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे आगे आगे आके तो आपको दिखेगा कि क्या मतलब डिफरेंसेस है दोनों के बीच में एंड क्या क्योंकि क्यों ये बेटर है एंड इसको क्यों ज्यादा प्रेफर किया जाता है. एंड ये बेसिकली ऑफलाइन सपोर्ट भी देता है. लाइक अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन है एंड आप अपने डिवाइस से कोई डेटा स्टोर करने के लिए भेजते हो सर्वर पे, तो लाइक वो आपकी क्वेरी रिक्वेस्ट को स्टोर करके रख लेता है एंड जब भी आपका डिवाइस कनेक्ट होता है तो वो जैसे ही कनेक्ट होगा वैसे ही आपकी क्वेरी लाइक जो भी टाइम स्टैम्प एंड ऑल दैट के साथ वो आपकी क्वेरी वहां पे सेव हो जाएगी. एंड ये डिजाइन टू स्केल है. तो आप ये आपके ऐप की जो स्केलेबिलिटी है वो भी इससे काफी ज्यादा बढ़ेगी एंड काफी अच्छा होगा. लाइक आपकी बिजनेस में अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आप इजीली अपने ऐप को स्केल कर सकते हो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है. सो या तो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस नहीं, क्लाउड फायरस्टोर यूज करिए. सो या क्लाउड फायरस्टोर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो लेआउट है वो लाइक पहले तो एक कलेक्शन होता है देन उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं
एंड उसके अंदर आप फर्दर सब कलेक्शंस भी बना सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नहीं तो आप लाइक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फील्ड्स होती है उसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सो या आपको एक बार दिखा देते कि कैसा दिखता है ये इन रियल लाइफ। या एक सेकेंड। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि लाइक ये डेटाबेस में रियली कैसे स्टोर होता है। तो लाइक ये क्लाउड फायर स्टोर फायरबेस कंसोल है एंड उसमें क्लाउड फायर स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये तो अभी हम लोग के जो मीम ऐप है उसी का, मतलब जो नोट्स वाला ऐप है उसका ही डेटाबेस स्टोर हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो लाइक अभी एक नोट उसमें एडेड है, टाइटल इसका अभिषेक है एंड डिस्क्रिप्शन ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है अभी के लिए। तो ये लाइक फर्दर पहले एक कलेक्शन है जिसका नाम नोट्स है, देन एक डॉक्यूमेंट है जो भी एक एम्बिगुअस नाम जो खुद से जनरेट हुआ है, एंड देन उसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक टाइटल एंड एक डिस्क्रिप्शन जिसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है। आप एक फर्दर कलेक्शन भी बना सकते हो एंड यहाँ पे आप कलेक्शन नेम दे के उसको अच्छे से यूज कर सकते हो, एंड देन फर्दर कलेक्शन के अंदर और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो एंड इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड क्योंकि ये काफी इजी है इम्प्लीमेंट करने को तो आप अपने ऐप में डायरेक्ट काफी इजीली इसको रिट्रीव भी कर सकते हो। सो या तो अभी आपको एक ऐप में रन करके दिखा देते हैं कि कैसे मतलब डेटाबेस स्टोर कैसे करेंगे डेटा। एक मिनट थोड़ा सा। या आई होप आपको दिख रहा होगा। या सो क्लाउड फायरस्टोर में आप देखेंगे आपका ये जो एक है, पहले तो आपने यहाँ से क्लाउड फायरस्टोर सेलेक्ट कर लिया एंड देन आप देखोगे कि ये जो टाइटल हमने दिया था वो ये आ गया एंड जो डिस्क्रिप्शन था वो आ गया। ठीक है, ऐप में तो ऐसा दिखेगा। एंड लाइक अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो लाइक आपको सबसे पहले तो डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए आपको जैसे पता है कि ग्रेड बिल्ड डॉट ग्रेडल में आते हैं ऐप लेवल के, एंड उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज है फायर स्टोर की वो ये वाली है, ये वाली डिपेंडेंसी फायरस्टोर डॉट स्लैश KTX और उसका जो भी वर्जन नेम है लाइक है ना। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप फर्स्टली तो एक रिसाइकलर भी होना चाहिए आपके डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तो उस वाले पार्ट पे भी आते हैं। सो आपकी जो मेन एक्टिविटी 2 है इसमें आपने एक तो रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है एंड रिसाइकलर व्यू में सारा डेटा आ रहा है। तो आपको जैसे पता है कि रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो में आपने देखा होगा पहले कि रिसाइकलर व्यू को चलाने के लिए आपको दो कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए, लाइक एक तो डेटा क्लास चाहिए एंड एक दूसरी चीज़ है कि आपको अडेप्टर क्लास भी चाहिए। तो डेटा क्लास में तो आपके दो कंपोनेंट्स हो गए, ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एंड सेकंड चीज़ आपकी अडेप्टर क्लास। तो अडेप्टर क्लास वैसी ही सिंपल सी है, लाइक उसमें एक क्लास है, उसकी लाइक अंदर एक इनर क्लास है माई व्यू होल्डर, एंड देन उसके तीन मेंबर फंक्शंस हैं एंड तीनों का फंक्शनैलिटी तो आपको अग्रिम ने समझा दी होगी लाइक उस दिन वाले वीडियो में, रिसाइकल व्यू वाले वीडियो में। सो या ऐसे ही है। एंड देन अब इसके रियल इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कि आप क्लाउड फायरस्टोर को डायरेक्ट अपने ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो पहले डेटा एडिशन वाले उसमें चले जाते हैं। तो लाइक तो डेटा एडिशन वाले पार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लाइक ये एक्टिविटी है डेटा एडिशन वाली, लाइक ये टॉपिक एंड इसके अंदर आप जो भी एंटर करोगे वो टॉपिक का नाम एंड ये डिस्क्रिप्शन एंड इसके अंदर आप जो भी एंटर करते हो डिस्क्रिप्शन, एंड देन सेव बटन क्लिक करके लाइक ये सेव बटन पे जो ऑन क्लिक लिसनर लगा है आपको ये बताया गया होगा अर्लियर वीडियोस में, आपने देखा होगा कि बटन पे ऑन क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं। ठीक है,
तो लाइक पहले तो हम लोग ने सारी आईडीज कलेक्ट कर ली, मतलब इस वाले की एंड इस वाले की आईडीज कलेक्ट कर ली, एंड देन बटन की आईडी कलेक्ट कर ली, एंड बटन पे लगाया हम लोग ने ऑन क्लिक लिसनर, एंड देन नल चेक्स लगा दिए एंड एरर्स शो कर दिए कि लाइक टॉपिक एम्प्टी ना हो एंड ऑल दैट, एंड डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी ना हो। एंड देन रियल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक सबसे पहले तो आपको एक हैश मैप बनाना होता है, लाइक उसकी एक की होनी चाहिए एंड उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो की में आपने जो टाइटल में आपने यहाँ पे जो भी एंटर किया टाइटल डॉट टेक्स्ट करके वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी एंटर किया वो डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। देन आप जो ये जो डीबी डॉट कलेक्शन यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो डीबी है वो डेटाबेस का रेफरेंस है। सो आप यहाँ पे प्राइवेट लेटेनेट वैर बना के डीबी डेटाबेस फायरबेस फायरस्टोर करके एक डिपेंडेंसी ऐड होगी, यहाँ पे एक इंपोर्ट ऐड होगा, वो करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो, यहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन इनिशियलाइज करके आपने वो हैश मैप का जो भी डेटा लेते हो, आपको जो भी कलेक्शन बनाना है उसका नोट्स यूज करके, मतलब उसका नाम देके। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे नोट्स यूज किया, जैसे कि आपने देखा होगा वो कंसोल में कि नोट्स में ही यहाँ पे सब ऐड हो रहा था। देन डॉट ऐड करके डेटा, एंड डॉट ऐड इसलिए क्योंकि अभी हम लोग लाइक डॉक्यूमेंट का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रहे। लाइक अगर डॉक्यूमेंट का कोई स्पेसिफिक नेम देंगे तो यहाँ पे सेट यूज होगा। एंड फिर उसके बाद एक तो ऑन सक्सेस लिसनर है, ऑन सक्सेस लिसनर होगा तो आपका एक तो टोस्ट आएगा एंड देन एक लॉग आएगा। टोस्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा एंड लॉग आपको ये लॉग कैट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे लॉग कैट में आएगा, ठीक है। एंड एक है ऑन फेलियर लिसनर, एंड किसी भी कारण से अगर आपका लाइक ऐप में डेटा स्टोर नहीं हो पाता है तो ये लॉग एरर दिखा देगा, यहाँ पे डेटा एडिशन में जो भी एरर होगा ये हमने टैग दिया हुआ है, एंड जो भी एरर होगा कि ये बता देगा। एंड देन जैसे ही आप इसको स्टोर कर लोगे तो लाइक नई एक्टिविटी खुल जाएगी, तो ये डायरेक्ट जाके वो मेन एक्टिविटी में चला जाएगा। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं, फिर देखते हैं मेन एक्टिविटी में क्या कोड है। तो मेन एक्टिविटी में बेसिकली हम लोग ने कोड लिखा होगा इसको रिट्रीव करने का, डेटा को यहाँ से तो हम लोग ने ऐड कर दिया, अब हमको देखना है कि रिट्रीव कैसे करेंगे। तो रिट्रीव करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। तो रिट्रीव करने के लिए भी आपको डेटाबेस का एक रेफरेंस तो चाहिए ही रहेगा। तो डेटाबेस का रेफरेंस आप बनाते हैं, देन आपको पहले से पता ही है कि रिसाइकलर व्यू में ही आपको शो करना है सारा डेटा, तो रिसाइकलर व्यू का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एंड देन रिसाइकलर व्यू में के अडेप्टर के लिए आपको एक एरे लिस्ट पास करनी होगी ताकि ताकि मतलब आपके जो भी एलिमेंट्स है वो सब उसमें स्टोर हो सके, लाइक डिस्प्ले भी हो सके। तो यहाँ पे तो एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे एंड जब उसके अडेप्टर में आप पास कर दोगे तो डिस्प्ले भी होने लगेंगे। एंड देन एक अडेप्टर तो चाहिए ही आपको, तो ये अडेप्टर ये 4 एसेंशियल वेरिएबल्स हो गए आपके। एंड इसको ग्लोबल इसलिए किया है क्योंकि क्योंकि अलग अलग फंक्शंस में इनको यूज करना है, तो लाइक तो ग्लोबल करना जरूरी था इसको। तो फिर एक तो ये कंपोज नोट बटन है, तो ये तो आपने देखा ही है कि इसको क्लिक करने से आप वाली एक्टिविटी में चले जाओगे जहाँ पे आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इससे तो आगे आते हैं। एंड लाइक अब तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का आईडी ले ली, रिसाइकलर व्यू की आईडी ले ली, देन उसका रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर, लाइक तो अभी आपको लीनियर लेआउट चाहिए तो लीनियर लेआउट, एंड उसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, ये सब आपने देख लिया होगा वो रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो। एंड नोट एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट यहाँ पे एरे लिस्ट को इनिशियलाइज कर लिया, लाइक इनिशियली उसको डिक्लेयर किया था एंड यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर लिया। एंड ये एक हमने एक फंक्शन बनाया गेट यूजर डेटा, तो ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन से हम लोग इस सारे डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो देखते हैं इस फंक्शन के अंदर क्या। तो इस फंक्शन में भी सबसे पहले हम लोग ने लिखा है कि लाइक जो डेटा बेस है उसका रेफरेंस लेते हैं, तो हम लोग ने क्लाउड फायर स्टोर का रेफरेंस ले लिया। एंड देन अब हमको कौन से वाले कलेक्शन में से निकालना है डेटा, तो कलेक्शन का नाम है हमारा नोट्स, एंड अब उस नोट्स में से जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब निकालना है उसमें। तो अपन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक ऐड स्नैपशॉट लिसनर। तो ऐड स्नैपशॉट लिसनर में आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि टाइप होता है, जिसका टाइप होता है इवेंट लिसनर, एंड जिसमें क्वेरी स्नैपशॉट को पास करते हैं। तो जो भी क्वेरी का स्नैपशॉट आ रहा है हमारे पास उसकी एक दो फंक्शन होते हैं ऑन इवेंट, तो जो ओवरराइडिंग फंक्शन है ऑन इवेंट इसके अंदर आते हैं, एंड देन देखते हैं कि एक जो क्वेरी स्नैपशॉट है जो जो कि मतलब वैल्यू है जिसका टाइप है क्वेरी स्नैपशॉट, एंड एक एरर शो होता है, थ्रो करता है। और अगर तो हम लोग देखते हैं कि अगर एरर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग या तो एरर अगर एरर आ रहा है तो तब तो हम लोग दिखा देंगे कि फायर स्टोर में कोई तो एरर हो गया डेटा स्टोरेज करने में या डेटा रिट्रीव करने में, एंड रिटर्न कर देते हैं, तो फिर डेटा नहीं शो कर सकते हम लोग। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग फॉर का लूप लगाते हैं एंड पूरा उसको ट्रैवर्स करते हैं जो भी लिस्ट है, एंड
लिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट चेंज टाइप जो एडेड होते हैं उसको उसको नोट नोट एरे लिस्ट में ऐड कर देते हैं। एंड फिर तो सिंपल सा ही है, आपने देखा ही होगा रिसाइकलेबल वाली वीडियो में, लाइक जो अडेप्टर है उसमें उसका नोट एरे लिस्ट को पास कर देते हो, एंड जो अडेप्टर है उसको रिसाइकलेबल से अटैच कर देते हैं, एंड रिसाइकलर व्यू के साइज को फिक्स कर देते हैं, एंड नोटिफाइड सेट चेंजेस। तो ये आपने नहीं देखा होगा ये अभी तक, तो ये इसलिए यूज होता है क्योंकि कभी अगर आपका डेटा आपके रनिंग में चेंज होता है, तो आपका जब भी ऐप चेंज हो रहा ऐप रन हो रहा है और डेटा चेंज हो जाता है, तो लाइक ये वाला फंक्शन आपको काफी हेल्पफुल होगा इसको यूज करने से। तो आपका जो रियल टाइम में जो भी डेटा चेंज हो रहा होगा ना वो डायरेक्टली चेंज दिख जाएगा आपको इस ऐप में। सो या इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो अभी तो इतना ही है, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए इसका गूगल पे। ओवर टू यू श्रेय। Okay. Thank you, Abhishek, for that detailed description of Firestore database. So now let's get introduced to one of the most important and very trendy services of real-time database, that is MLKit. So, means ML, machine learning, means an hyped word in nowadays. So yeah, but as, as simple, means the name seems to be simple, but it's not that simple. If you want to implement machine learning or means आपको अपने ऐप को ऑटोमेट करना है, तो फिर आपको रिग्रेशन, देन न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑल, ये सब कुछ पढ़ना होगा। आपने तो सुना ही होगा, मीन्स यू रिक्वायर हायर लेवल मैथमेटिक्स फॉर मीन्स मशीन लर्निंग एंड ऑल, बट in this case, no need. We are just using an API with the help of Firebase database, and we are good to go to use the different means services or means different mechanisms. Okay. Yeah, so means it is actually the console of means it's the Firebase console, and how the means ML kit look like. So means we get different facilities like text recognition, face detection, barcode scanning, image labeling. Like means in image labeling, you can label an image that whether it's a person or means it's an animal or it's a plant or flower, like that. Landmark recognition, like means if you will means scan a landmark, or you will take up upload a photo of a landmark, then it will recognize it. Okay, and it will give you a detailed description about it. So means we are not going to means integrate it on in our app. Here we are just going to get a brief introduction about it. Okay, means अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, so I can share you the its documentation. So means Yuvraj, can you share the documentation for ML Kit? Okay, so now means let get to know some of the more things about it. Okay. Okay. Okay, so what are the benefits which it's gonna provide us? So it explore the ready-to-use API, which helps us in text recognition, face detection, barcode scanning, image labeling, object detection, tracking, landmark recognition, smart reply, translation, and language identification. So these are the means different facilities which we are going to get with the help of this ML kit. Second, train your own image labeling model with auto ML vision edge. Means if you want to train your ML kit with the help of the data which you want to give, you can do that also. Means ऐसा नहीं है कि जो limited amount of means training उन्होंने दे रखी है API में, that's no. You can give your own data also and train your model. Okay, like which we do if we will apply means an ML from scratch, means like that only. Learn about using mobile optimized custom model in your app.
Okay, means up, that means it's the same point only. That means you can customize it as you want, means as it is suitable for your app. So means Firebase has made ML integration as easy as using any other service. So you need not to go in deep. Means ऐसे ML सीखने में around 6 months at least. And if you want to go in deep and get to know, means learn it really well so that you can integrate it in in any of your app, you need to means you need to really spend lots and lots of time over there. However, with the help of Firebase, you need not to worry about the means logic part. Just you need to integrate it. Okay. So ML Kit make it easy to apply ML technique in your app, and by being by and here we are using means the Google ML technology only, as we have seen that Firebase is backed by Google. So means and there are means different APIs such as Google Cloud Vision API, TensorFlow, Flowlight, and the Android Neural Network APIs. Means and these all the three APIs are actually synced in a single SDK, which is actually means used by the Firebase. Okay. Okay. So means it's not that difficult. Just first of all, you need to integrate the SDK. Then you need to prepare the input data. Means if you want to make it like a face recognition, so you need to upload means you need to scan your face like that. And then you need to apply the ML model to your data. Means whatever the model, if you have trained it in that manner also, and if you haven't trained it, means it is like pre-trained, and you haven't means modified it or customized it, still it's gonna work. Okay. So means this was all about the ML Kit. Now I would hand it over to Abhishek for the storage part. Okay. Yeah, thank you, Shreya. सो या क्लाउड स्टोरेज। तो गाइस जो क्लाउड स्टोरेज होता है ना, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। लाइक जो नॉन टेक्सचुअल डेटा होता है, लाइक जब आप कोई भी फाइल स्टोर करना हो एंड कोई भी इमेजेस स्टोर करना हो, आप स्टोर कर सकते हो ओवर द इंटरनेट वाया क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, जो कि गूगल खुद ही है। एंड वो अपनी स्टोरेज देता है आपको, तो सिक्योरिटी का भी ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है। एंड आप अपने ऐप में भी इसको बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो लाइक कुछ ऐसा दिखता है उसका कंसोल में व्यू। सो लाइक आपको दिखाते हैं कंसोल में लाइक दिखता कैसे है। सो पहले तो आप देखोगे कि ये एक बकेट है। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड अगर दिख रहा है तो आप देखिए कि ये जो है, पहले सबसे पहले तो आप एंटर करते ही आपको दिखेगा ये आपका क्लाउड स्टोरेज में, गूगल की क्लाउड में आपको जो भी लिंक मिला है ना आपकी बकेट स्टोर करने का, वो ये लिंक है। एंड उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है अभी प्लांट इमेजेस। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक अभी अभी के लिए हम लोग ये नाम दे रहे हैं प्लांट इमेजेस। एंड उसके अंदर हम लोग ने पहले से ही कुछ इमेजेस स्टोर करके रखी हुई हैं। एंड उसके अंदर भी सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं। तो लाइक ये एक फर्स्ट प्लांट की इमेज है। लाइक आप देख सकते हो इसमें 5 इमेजेस हैं। एंड आप इसको क्लिक करके देख सकते हो कि इमेज है। एंड यहाँ पे लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आप इमेज के लिंक पे पहुंच जाओगे जहाँ मतलब जहाँ पे ये स्टोर है। एंड ये फाइल लोकेशन आ रही है आपकी, लाइक आपकी जो बकेट में, गूगल की क्लाउड की बकेट में कहाँ पे ये स्टोर्ड है इमेज, उसकी ये लोकेशन है। एंड ये थोड़ा मेटा डेटा एंड ऑल है।
सो ऐसे ही और भी प्लांट्स की इमेजेस में आप और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हो इस फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर इन्फो, उसके अंदर और भी इमेजेस, एंड चाहे आप कुछ भी वीडियोस, इमेजेस, जिफ्स या फाइल्स, कुछ भी टेक्स्ट फाइल्स, कुछ भी इसमें अपलोड कर सकते हो। एंड या एंड ये कुछ तो रूल्स है इसके यूज करने के, एंड कुछ इसकी एनालिटिक्स है, कितना यूज हुआ ये एंड ऑल। बाकी आप इसको खुद से एक्सप्लोर करो, एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, गो टू डॉक्स में जाके। एंड या क्लाउड स्टोरेज के लिए अभी तो इतना ही। एंड थोड़े बेनिफिट्स हैं क्लाउड स्टोरेज के, लाइक जो बेनिफिट्स में आते हैं, फर्स्टली तो ये इसकी यूजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, लाइक आप जो डेटा स्टोर करते हो इसके अंदर वो आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो, एंड इसकी यूजिबिलिटी बहुत हाई है। एंड सिक्योरिटी, एज यू नो, ये तो लाइक ये गूगल की सर्विस है, तो लाइक गूगल की जैसी भी सिक्योरिटी है, आपको पता है कैसी सिक्योरिटी है, वैसे ही इसको भी उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। एंड ये कॉस्ट एफिशिएंट है, लाइक फायर बेस में आप अगर बनाते हो तो लाइक कुछ यूजेस तक आपका जो स्पार्क प्लान होता है उसमें उसके अंदर काफी हद तक फ्री ही रहता है। जैसे आप स्केल करते हो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड ये कन्वीनियंट शेयरिंग ऑफ फाइल्स है, तो आपको इसमें जो फाइल स्टोर करते हो तो लाइक क्लाउड पे वो फाइल्स रहती हैं, तो आप इसका जो लिंक होता है वो इजीली जनरेट करके शेयर कर सकते हो अपनी फाइल्स को, एंड एक्सेस भी कर सकते हो अपने ऐप में इजीली। एंड ऑटोमेशन है, तो आप इसको एक क्लाउड फंक्शन बना के अपने रिट्रीवल और स्टोरेज को ऑटोमेट भी कर सकते हो। एंड मल्टीपल यूजर्स का तो आपको पता ही है, लाइक एक साथ काफ़ी सारे यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स इसमें अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल्स व्यू कर सकते हैं, फाइल्स एडिट कर सकते हैं। एंड लाइक ये क्लाउड स्टोरेज है तो मतलब ही क्लाउड है, एंड क्लाउड पे तो आप जानते ही हो कि कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, 24/7 अवेलेबल है ये सब कुछ। एंड ये सारे फीचर्स हैं। एंड या आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी लवली ऑडियंस। एंड ये हमारे सोशल्स हैं, फॉलो करिएगा गाइस। थैंक यू एवरीवन।